आज का हमारा टॉपिक है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस की डिवीजन है फियोफाइटा, फैमिली एक्टोकार्पेसी और जीनस इसकी एक्टोकार्पस है। एक्टोकार्पस occurrence, it is widely distributed on cold water. A few species occur in fresh waters. Some members are epiphytes and endophytes. एक्टोकार्पस जो है ये एपीफाइट के तौर पर भी ग्रो करता है और एंडोफाइट के तौर पर भी ग्रो करता है। एपीफाइट का मतलब ये है कि ये दूसरी अलजी के ऊपर भी ग्रो करता है और दूसरी अलजी के अंदर यानी कि उसके थैलस के अंदर भी रह के ग्रो करता है। इसका थैलस कैसा होता है? इट इज ए फिलामेंटस alga, may be diploid or haploid. The filaments are branched and uniseriate, single cell thick. It shows heterotrichous habit. इसकी जो थैलस स्ट्रक्चर होती है वो एक ब्रांच नुमा स्ट्रक्चर होती है, एक यूनिसिरिएट स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब ये होता है कि सिंगल सेल थिक होती है। ये एक जो बैंड है या एक आपको बॉक्स नजर आता है, दिस इज अ सिंगल सेल, दिस इज अ सिंगल सेल, सिंगल सेल, सिंगल सेल। इन दिस वे द एक्टोकार्पस फॉर्म इज द थैलस। इसको कहते हैं यूनिसिरिएट। अब थैलस की आगे बहुत सारी अकसाम है जिसमें प्रोस्टेट सिस्टम है। देयर आर हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग फिलामेंट्स which are branched and septate. It attached with a substratum by rhizoids. In epiphytes, it penetrates the horse. जब ये एपीफाइट के तौर पे ग्रो करता है किसी दूसरी एल्जी के ऊपर, तो इसकी जो थैलस की स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ ये दूसरी एल्जी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। Erect system, it arises from the prostate system. It consists of the well-branched filaments which are vertical. At the end of the filament cells are the fine hair-like sheath may be present in some older parts. तो इसके दो सिस्टम है थैलस के, एक इरेक्ट सिस्टम है और दूसरा प्रोस्टेट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम का मतलब है कि दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड इरेक्ट इज अ वर्टिकल सिस्टम। वर्टिकल इसकी ब्रांचेस होती हैं और प्रोस्टेट में इसकी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं। इसका सेल कैसा होता है? सेल वॉल इज थ्री लेयर्ड। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, पेक्टिक and pectin. Algin and the fucoidan are also present. Fucoidan, this is also a polysaccharide which is different as compared to other types of the algae. The pigment इसमें कौन से होते हैं? Chromatophores, ribbon like discoid like shapes of the pigments are present in the ectocarpus. Fucoxanthin is dominant pigment. Chlorophyll A, C, B, carotene, and other xanthophylls are also present. Perinoid-like bodies are associated with the chromatophores. इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिन होता है, मैनिटोल, अल्कोहल होता है। इसकी ग्रोथ जो है वो किस तरह से होती है? ट्राइकोथैलस मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द हेयर। ट्राइकोथैलस, ट्राइकोथैलस का मतलब ये होता है कि इसके थैलस में तीन तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मेस्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एट द बेस ऑफ द हेयर। जहां इसकी हेयर्स पाई जाती हैं वहां पे उसकी नीचे वाली सतह पे इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द टर्मिनल हेयर एंड वेजिटेटिव सेल ऑफ द ब्रांच। The apical growth in process system is known as the apical. This is the growth system basically. The reproduction in the ectocarpus is asexual. Two types of the sporangia are born on diploid plants. By flagellate zoospores are produced in both kinds of the sporangia. Zoospores may be haploid, produced in one-celled unicellular sporangia, or they may be diploid, formed in many-celled plurilocular sporangia. एक यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया होता है, एक प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया होता है। Both kinds of sporangia are present on the same diploid sporophyte plant. The sporangia are born terminally and singly in little branches. उसके बाद यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया कैसे होते हैं? These are present terminally. The cell acts as the sporangial initial, becomes enlarged with large number of the chromatophores. Four haploid nuclei are produced by meiosis, then divides by mitosis to produce the 32 to 64 nuclei. Cytoplasm and chromatophore surrounds the nucleus and
मेटामॉर्फोस्ड इनटू द मियोस्पोर्स। मेटामॉर्फोस का मतलब ये होता है कि अपनी ये शक्ल तब्दील करता रहता है। These haploid spores released from the sporangia by an apical pore. Meiospore is pyriform and biflagellate. The flagella are laterally insulted. Germination of meiospores. Meiospores withdraw their flagella and becomes thick-walled. After testing period, they germinate and form a small germ tube. Septum is formed between the spore and the germ tube. The process system is formed from the germ tube after repeating divisions. The projecting system arises from the filaments of the process system. The new plant is haploid, therefore it is gametophyte. Therefore, these spores are called the gonozoospores. These are the structures of the zoospore formation and the release of such type of the spores. Then these diagrams is the germination or the development of the sporangium. उसके बाद है plurilocular sporangia. These are also developed from terminal cell of which called lateral branch. These are elongated, cone-like multicellular structures. They select as the sporangial initials, becomes enlarged and produces a row of 6 to 12 cells by mitosis. A cone-like structure is formed by repeating divisions. Each cell repeats a sporangium. The content of the sporangia are transformed into pear-shaped diploid mitospore. Each spore has two lateral flagella and is liberated through the terminal pore. आगे है जर्मिनेशन ऑफ द मिटोस्पोर्स। इसको देखने की जरूरत नहीं, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस और द एनेसोगेमस। Plurilocular gametangia are produced on the haploid plants. The terminal cell of a lateral branch becomes enlarged and acts as the gametangial initials. Vertical row of cells are formed by mitosis. Hundreds of small cubical cells are formed by the repeated divisions. The contents of each cell metaphors into uniform, pyriform, biflagellate haploid zoospores. The gametes are relatively smaller in size as compared to the zoospores. There are various forms of thus sexual reproduction. Number one है the isogamy. In some species, the morphological similar gametes fuse with each other. This is known as the isogamy. Anisogamy means if two fusing gametes are dissimilar in size, they are produced in different gametangia. The smaller ones are produced in macrosporangia, microgametangia. The large ones are produced in the megagametangia. Then fertilization occurred and produces the sporophyte. The alternation of generation generally occurred in the ectocarpus, which is isomorphic alternation of generation. The sporophyte becomes the gametophyte becomes the sporophyte. This is generally the general phenomena. You can read yourself and comprehend. If you need feel any difficulty, then let me know. Then this is the life cycle. This is the life cycle of the ectocarpus. Life cycle of ectocarpus sporophyte become the gametophyte and the gametophyte become the sporophyte. In both generations alternate each other. The 2n form the 1n generations, and 1n generation, it means that the form of the different types of the gametes. When gametes fuse to form the zygotes, and the zygote further develop into the sporophyte.